Oxfam Speak English page Hitchhak. Hello everyone, I am Yaqub Ashrafi and you are going to watch Oxfam English program. Now, going to watch or going for watch? Of course, going to watch. Now, welcome to Oxfam English program. What is welcome to? Welcome for? Nahi. Welcome to Oxfam English program. Your suspicion is well founded. Today, we are going to unfold the secrets of to and for. क्या आप कभी कंफ्यूज होते हैं टू और फोर को लेकर? यकीनन होते होंगे, और अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. राइट, मीन्स हाउ टू यूज टू एंड फोर. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. डियर व्यूअर्स, टू का प्रयोग हम लोग करते हैं डायरेक्शन में, डेस्टिनेशन में और गोइंग समवेयर में. गोइंग समवेयर. एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू लंदन, वेयर आर यू गोइंग टू? इन हॉलीडे आई एम नॉट गोइंग टू माई ऑफिस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. आई एम नॉट गोइंग टू माई क्लासेस. Are you going to home? Hold on. Zone of caution. क्या आपने भी कभी home के पहले to का प्रयोग किया है? यदि हाँ, तो ये important point आपके लिए है. You must note down कि home के पहले to का प्रयोग नहीं होता. home के पहले to का इस्तेमाल नहीं होता. So it is wrong to say I am going to home. You will have to say I am going home. Home without to. Hope it is clear. Now, next point is when we talk about time or 2 points of time. Example, it is 7:45. मतलब 8 बजने में 15 मिनट बाकी है. It is 5 to 10. मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है. It is 16 minutes to 12. मतलब 12 बजने में 16 मिनट बाकी है. और when we talk about 2 different points of timing, example, office starts from 8 a.m. to 8 p.m. Now, the 2 points starting 8 a.m. to 8 p.m. Right, the 2 time period. Getting, I'm available from Monday to Friday. From Monday to Friday. So when we talk about 2 different points of timing, we use to. And next usage, giving something. When we give something to somebody, take an example, give it to me. Give it to me. I will give you some books. That would be very, very helpful. Okay, so when we talk about giving, then we use to. And if we talk about end point of something, जैसे example, कि water level rose to my knees. Rose to my knees, because we are talking about end point. So can you tell me, just here a quick recap, okay, when to use to when we talk about direction, when we talk about destination, or when we talk about going somewhere, or giving something, or 2 points when we talk about 2 points or time or end point. And very importantly, when we talk about preference, means तरजीह. जैसे अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि मैं कॉफ़ी पे चाय को तरजीह देता हूँ. I prefer coffee to tea. He prefers staying home to work. So when we talk about preference, then we use to. Hope it is clear. Now, one more point, that is when we show a reason or motive. जब हम इरादे को व्यक्त करते हैं, इरादा बताते हैं, उसमें भी to का प्रयोग करते हैं. Example, I'm going to market to buy a book. Where are you going? I am going to meet my friend. I am going to meet my friend. So when we talk about motive or when we talk about reason, to is used.
Now let's unfold the secret of for. Right, the first use is very plain and simple when we talk about benefits. जब हम benefits की बात करते हैं तो for. Take an example. Yogurt is very helpful for health. Exercising is really helpful for everyone. So when we talk about benefit, we use for. And for is used for the period of time. Example, I have been teaching English for 18 years. तो मैं अंग्रेजी 18 साल से पढ़ा रहा हूँ. तो when we talk about time period, we use for. How long have you been living in Patna? How long have you been living in Patna? Or we can say, for how long have you been living in Patna? I have been living in Patna for 20 years. मैं पटना में 20 सालों से रह रहा हूँ. तो when we talk about time period of time, then we use for. And next uses of for is very beautiful, and that is helping someone. When we help someone, we use for. Example, please bring this for me. Can you pass the jug for me? So when we help someone, we use for. And next use of for is purpose or use. Note down, जब हम purpose और use की बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर होंगे V plus ing, यानी verb में ing. Take an example. It is used for opening the bottle. It is used for opening the bottle. For के बाद V plus ing, that is opening the bottle, right? And of course, when we talk about for, it is also used for motive or reason. Now come on, is it a bit trickier? हमने पहले बात की थी कि to का इस्तेमाल भी motive और reason में होता है और for का इस्तेमाल भी motive और reason में होता है. दोनों में ज़रा अंतर समझिए. It's very easy. To is used for motive or reason with a verb. जैसे I am going to market to buy a book. So buying is a verb. That's why to buy a book, right? And I'm going to market for you. मतलब कि जब रीज़न और मोटिव वर्ब के साथ हो तो टू, और जब रीज़न और मोटिव नाउन के साथ हो तो फॉर. और दोनों की मीनिंग के लिए होगा. तो के लिए यदि वर्ब के साथ हो यानी एक्शन के साथ हो तो टू, और के लिए अगर नाउन के साथ हो तो फॉर, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मीट हिम. आई एम गोइंग टू मीट हिम. यहाँ पे टू के बाद वर्ब है इसलिए यहाँ पे टू आया, यानी वर्ब के साथ टू. आई एम गोइंग टू मीट हिम. और अगर कहें इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर यू, तो यहाँ पे फॉर क्योंकि यू है ये नाउन है यानी प्रोनाउन है. प्रोनाउन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है. इज दैट क्लियर? सो मोटिव और रीज़न के लिए टू और फॉर दोनों ही का इस्तेमाल होना है. नो कम ऑन, वन मोर ट्रिकियर थिंग एंड यू मस्ट कीप इन माइंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहाँ टू और फॉर दोनों ही पॉसिबल हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि ही ब्राउट अ बुक फॉर मी और ही ब्राउट अ बुक टू मी. नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा सही है? दोनों ही सही है. अगर आप कहोगे ही ब्राउट अ बुक फॉर मी, इसका मतलब यहाँ पे वो हमारी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है. तो जब कभी हेल्पिंग में होगा तो फॉर, एंड ही ब्राउट अ बुक टू मी, इसका मतलब यहाँ पे उसकी ये ड्यूटी थी कि वो मेरे लिए किताब लाए. जैसे अगर आप किसी फंक्शन में होते हैं और आप अपने दोस्त से कहते हैं कि will you please bring something for me to eat, bring something for me to eat, right? So यहाँ पे bring for me to eat, पहला नाउन है for me और दूसरा to eat एक्शन है यानी वर्ब है. तो जब कभी भी हम किसी के लिए हेल्प की बात करेंगे तो for, और अगर हमारी ड्यूटी है तो फिर to. टेक एन एग्जाम्पल, I made a phone call to my friend. तो ये हमारी ड्यूटी थी कि मैं उसे फ़ोन कॉल करूं. I made a phone call for my friend. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने दोस्त के लिए फ़ोन कॉल किया क्योंकि वो किसी भी कारण से, वो किसी भी रीज़न से फ़ोन नहीं कर सकते थे, मैंने उसके बदले में किया. तो जब कभी भी हेल्प की बात होगी तो for, और अगर ड्यूटी की बात होगी, एक्शन की बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी तो to का हम लोग इस्तेमाल करेंगे.
Hopefully it is clear for you how to use to and for, and of course in the next video we will see the beautiful phrasal verbs using to and for. Till then, bye bye, happy learning, take care.